Hello, good evening, good morning and good afternoon masters wherever you have joined from. So अभी हम हिंदी में थोड़ी चर्चा करेंगे यूनिफाइड के इस लेवल 3 में सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं हम, प्रमोटिंग अदर सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो क्या सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, बाबा जी क्या सिखा रहे हैं हमको? कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, उसके ऊपर में एम्फेसाइज करना है अपने को कि उन्हीं पे जोर देना है बेसिकली कि क्या हम सीख के आए हैं और उन्हीं चीज़ों को वापस से हम रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखा था लेवल 2 में, अब हम दूसरों का सीखना चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें उसके पहले जो हमको बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, एक चीज़ है फ्री विल, जो बाबा जी ने बार बार यहाँ पर बोला है फ्री विल के बारे में। दूसरा ग्रुप कॉन्शियसनेस, कि जो जो ग्रुप होता है उसके मतलब एक माइंड सेट होता है, तो उसके हिसाब से कैसे इम्पेक्ट होता है उसका ओवरऑल आपके प्रोग्रेस पे, कम्युनिटी की प्रोग्रेस पे, एक मतलब इंडिविजुअल से परिवार पे, परिवार से आपके कॉलोनी तक ले जाए, कॉलोनी से आप अपने पूरा का पूरा टाउन, एंड देन इट इट गोज अंटिल लाइक द होल ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली। तो इसके ऊपर में, और फिर तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा जी इस चैप्टर के अंदर बता रहे हैं वो कि दूसरों का सेल्फ एक्सेप्टेंस हम लें। तो हम क्यों लेना और उसमें क्या क्या ज़रूरत है कि हमें दूसरों का सेल्फ एक्सेप्टेंस लेना है, मतलब कहाँ पर हम चूक रहे हैं जिसके लिए हमको ये चैप्टर दिया गया है, इस चीज़ को समझना है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करूँगा, जो कि काफ़ी डिटेल्ड में अब साइंस इसके आया है कि किस तरह से कॉन्शियसनेस काम करती है, किस तरह से फ्री विल काम करती है, कैसे हम सभी लोग कनेक्टेड हैं, और कैसे बेसिकली एक जैसे एक माला बनती है तो एक भी अगर मोती बिखर जाए तो पूरी माला बिखर जाती है, तो सभी का एक साथ होना जरूरी है। तो वो चीज़ भी एक साइंस की तरह भी प्रूव हो रही है, तो उसके ऊपर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अभी हम आप लोग सभी यहाँ पर हो, तो एक एक आपके अंदर में एक चाह है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो बेसिकली। आप अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया, आप अपना समय दे रहे हैं और आप सिंसियरिटी से इसको कर रहे हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ यहाँ से एक हासिल करना चाहते हैं, आपके अंदर वो सिंसियरिटी है। लेकिन होता क्या अपने आसपास में, एक ये चीज़ तो है, लेकिन हम हमेशा कितना भी कर लें, हमारा ईगो जो रहता है, मतलब एक समय के बाद वो चले जाता है, लेकिन जब तक हम इस राह पे चल रहे हैं तब तक ईगो भी सामने आता है। एक अपना 3D ईगो होता है, जो कॉन्शियसनेस के ऊपर ईगो होता है, कि जहाँ पर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। ईगो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए साइंस की लैंग्वेज में तो DNM, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, कि आपका आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो आपको हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है, किसी तरीके से आपको सेफ रखना चाहता है। तो वो जो बियॉन्ड द लिमिट चीज़ें होती है वो करने के लिए रोकता है। अभी हम एक एक तो ये ईगो, और दूसरा होता है फिर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, जहाँ पर हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं और दूसरा हमें हमेशा नीचे दिखते हैं। तो बाबा जी हमको करेक्शन वहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल में सेकंड प्लेस पे, जहाँ पर हमें कई बार ऐसा लगता है लोगों को देख के कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सामने वाला नहीं करता है, हम सर्विस कर रहे हैं, सामने वाला नहीं करता है, और फिर हमें जजमेंट आने लग जाता है उनके लिए कि ये तो बेबी सोल है, या फिर ये भ्रष्ट है, या फिर इसके अंदर में किसी तरह का स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है। तो इस तरह के हमारे अंदर में बहुत सारी थॉट्स आती हैं और हम जजमेंट लगाने लग जाते हैं। जबकि होता क्या है कि हमारे सामने दुनिया में जो भी हमारे सामने आता है, हम जो संपर्क में आता है, हमारे परिवार वाले हुए जो लॉन्ग टर्म में हमसे कनेक्टेड रहते हैं, हमारे पड़ोसी हुए जो भी कई बार लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड रहते हैं अगर हम एक ही जगह पर पूरा जीवन निकालते हैं, फिर अपने काम के साथ में कलीग हो गए, टीचर्स हो गए, ऊपर रिश्तेदार हो गए, तो सभी लोग हमारे सामने आते हैं तो किसी न किसी रीज़न से हमारे पास हो। हमारी लाइफ की प्लानिंग पूरी हम ही करते हैं। इस 3D वर्ल्ड में आने के लिए, आने के पहले जब हम पृथ्वी पे आते हैं उसके पहले हम प्लान करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है इस लाइफ में। उसके लिए हम प्लेयर्स भी डिसाइड करते हैं, हमारा खुद का गेम है, हमारा खुद का ये प्ले है जिसमें हम अपना रोल डिसाइड करते हैं और प्लेयर्स भी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन आएगा। फिर वो प्लेयर भी अपने हिसाब से आप उनको रोल भी देते हो कि आपको अच्छा करना है, बुरा करना है, या अच्छा बुरा मतलब 3D सेंस में बोल रहा हूँ, कि जिसमें आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए हेल्प की तो आप उसको अच्छा बोलोगे, किसी ने आपको ठुकरा दिया, धुतकार दिया तो आप उसको बुरा बोलोगे। लेकिन वो सिर्फ ईगो बेस्ड थॉट पे आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके साथ जो भी हो रहा है
वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है और वो सही हो रहा है। इसमें फिर फ्री विल आती है जहाँ पर हम चूक कर जाते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ी सी देर में। तो हम कई बार ये जो हमारी प्लानिंग के हिसाब से होती है तो हमें जजमेंट आने लग जाते हैं कि सामने वाला ऐसा है। तो यहाँ पर बाबा जी हमको करेक्ट करना चाहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे सामने आई है, जो तुमको एक ये भाव ला रही है कि ये गलत है, सामने वाला अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से तुम्हारा करेक्शन करने के लिए आई है। मतलब बोलते हैं ना कि दुनिया आपका मिरर रिफ्लेक्शन है, जो आपके सामने आता है, जिस फ्रिक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हैं उसी तरह के लोग आपके सामने आते हैं। तो जब भी आपके पास में थॉट आएगा, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये थॉट तभी आएगा आपके अंदर में जब आप यूनिफाइड नहीं रहेंगे गॉड सेल्फ के साथ में। हम क्वालिटीज हमने देखी है। अगर आपके अंदर में यूनिफाइड क्वालिटीज सारी आ गई, आप उनको एटलीस्ट बौद्धिक तरीके से भी अगर आप उनको समझने लगे, उनको एक अपने जीवन में अवतरण करने लग गए उनका, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी। तो आपकी जो जजमेंट वाली जो चीज़ है ना, वो अपने आप हटती जाएगी। तो आप दूसरों को एज इज जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, पहली ये चीज़। और दूसरा ये बाबा जी जो एम्फेसाइज कर रहे इस चैप्टर के अंदर कि दूसरों का सेल्फ एक्सेप्टेंस लेना है। आपको ये महसूस करना है कि वो जैसा है अपने आप को उसने स्वीकारा है। मतलब हम जैसे अपने आप का सेल्फ एक्सेप्टेंस ले ना पिछले चैप्टर 2 के मतलब लेवल 2 में, कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे सेल्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे ही अपने आप को डिज़ाइन करके लाए हैं। यहाँ पर हम अपना प्लान पूरा अपनी जो जर्नी है वो वैसे ही डिज़ाइन करके लाए हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलर तरीके से ये आपका प्ले है, जो आपके अराउंड जो भी लोग हैं, तो आपको उनको एज इज एक्सेप्ट करना और ये भी एक्सेप्ट करना है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जब आपने ये कर लिया तो ये अपने आप दूसरा वाला अपने आप ठीक होने लग जाता है। अब आपने होनोपोनोपोनो के बारे में सुना होगा कि ये एक टेक्निक है। इसका थोड़ा अगर आप यूट्यूब मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ऑफकोर्स मुझे पता है कि आप सभी को इसको पता होगा इसका। तो इस टेक्निक के अंदर में भी यही चीज़ है एक्चुअली। ये जैसे बाबा जी हमको यहाँ दिखा रहे दूसरों का सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये भी वैसी है जो हवाईयन टेक्निक है, जहाँ पर ये शामन लोग किया करते थे इसको। और ये क्या, पेंडेमिक आती थी, किसी प्रकार की कोई उनके पास में तकलीफ आती थी, या किसी प्रकार का कोई भी उनको परिवार में बीमार होता था, तो वो क्या करते थे कि वो एक्सेप्ट करते थे दूसरे पर्सन को। हीलिंग होती थी, लेकिन हीलिंग कैसे होती थी कि अगर मेरे सामने सिचुएशन आई है तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर में ऐसी चीज़ है, या मेरे प्लान में ऐसा कुछ है जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है एज इज। और जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ के लेसन जो होते हैं, आपके पास में किसी भी तरीके की चीज़ें चलती है जिसमें आपको कोई तकलीफ दे रहा है या कोई आपके साथ में अच्छा भी कर रहा है, तो ये सब कुछ आपका प्लान है। और स्पेशली जहाँ पर नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू हम जाते हैं, वहाँ पर चीज़ आती है कि आपकी लर्निंग होती है वहाँ पर। तो जिस टाइम हम उस लर्निंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसको स्वीकार लेते हैं कि हाँ ये मुझे सीखना है, आपने एक्नॉलेज किया, उसी टाइम आपकी बीमारी है तो बीमारी, या फिर आपका कुछ ऑफिस में कुछ तकलीफ है तो वो परिवार में कुछ तकलीफ हो, अपने आप ठीक हो जाएगी जब उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरा खुद का प्लान है, ये मैंने खुद ने डिसाइड किया है। आपने अगर इसको रियलाइज कर लिया तो आपकी लर्निंग हो जाएगी उसको। और ये एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको अगेन अपना माइंड से यूज करके करें, ईगो से आप एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्टेंस ऐसा आना चाहिए कि आपको लगे कि वो पर्सन जो आपको तकलीफ दे रहा था, अगर वो आपके सामने आता है तो आपको फिर भी उसके लिए प्यार ही रहेगा। तो फिर आपका लगेगा कि आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस किया। अब यहाँ पर फ्री विल की बात आती है कि फ्री विल के बारे में बाबा जी काफ़ी बोल रहे हैं, और हम 2 दिन से इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। सुधाकर जी ने बहुत अच्छे से समझाया हमको इसके बारे में। तो फ्री विल भी एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे कि हमने अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार किया आने के पहले कि हमें इस लाइफ के टाइम में हमको ये अचीव करना है। अभी फ्री विल क्या चीज़ होती है कि हम डिसाइड करते हैं इसी बीच में, कि जैसे कि आप इसको इस तरह समझिए कि एक ब्लूप्रिंट चार्ट होता है, अगर आपने देखा हो वो डायग्रामेटिक, जिसमें हम होता है कि स्टेप ए आएगी तो ऐसा होगा, फिर उसके बाद में 2 ऑप्शन आएंगे यस एंड नो के। यस एंड नो से यस अगर आपने पाथ चूज़ किया तो इस तरफ जाएंगे, नो किया तो इस तरफ जाएंगे। तो हर स्टेज में आपके पास में लाइफ में एक फ्री विल होती है, जहाँ पर एक तो आपका प्लान होता है, डिवाइन प्लान, जहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे ये अचीव करना है इस लाइफ टाइम में। और दूसरा आपको यूनिवर्स बोले, नेचर बोले, गॉड बोले, आपको एक संपूर्ण बोले तो फ्रीडम दी जाती है आपको, पूरी की पूरी तरह से आपको ये दिया जाता है कि आपके लिए ये प्लान है, लेकिन आप इसको क्विट करके दूसरा भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आते हैं जो तकलीफ लेके आते हैं, बहुत सारा इस तरह का प्लान करके आते हैं अपनी
बर्थ प्लानिंग के अंदर में, अपनी सोल प्लानिंग के अंदर में, कि मुझे बहुत सारा अपने प्रारब्ध कर्मा को ख़त्म करना है, उनको बैलेंस करना है, बहुत कुछ सीखना है मुझे, बहुत सारे इमोशन सीखना है मुझे। तो वो क्या प्लान करते हैं, टू मच डिफ़िकल्टीज लेके आ जाते हैं। वो गरीब बन के आ जाते हैं, बेरोजगारी रहती है, परिवार में तकलीफ रहती है, शारीरिक तकलीफ हो जाती है। तो वो ये सारी समस्याएं इतनी एक साथ लाते हैं कि अगर ये सारी वो एक साथ ठीक कर लें तो उनका इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनका सोल लेवल पे, क्योंकि वो बहुत सारे इमोशंस को सीखेंगे, बहुत सारे कर्मा को बैलेंस करेंगे और बहुत सारी एनर्जीज को समझ पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर वो कुछ हद तक उसको करते रहते हैं और एक समय के बाद वो क्विट कर देते हैं अपने आप में। अपना जो ईगो माइंड उसका डिसीजन लेके कि मुझसे नहीं होगा, सो आइदर दे विल सुसाइड और दे विल जस्ट डिसअपियर फ्रॉम द सिचुएशन एंड दे विल नॉट फेस इट। कुछ भी हो सकता है उस केस में। तो यहाँ पर वो फ्री विल यूज़ कर लेते हैं कि उनके पास में ये एक ऑप्शन था कि अगर आपको ये कंटिन्यू करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो आप क्विट कर दीजिए। तो क्विट करने में वो करते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि वापस से उनको आना पड़ता है, और जब वापस आते हैं तो और इंटेंस लेके आना पड़ता है, क्योंकि पिछली लर्निंग जो थी आपकी, आप 5th क्लास में पढ़ रहे थे और अगर आप 5th फेल हुए तो 5th को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। वैसा ही आपको फिर से इस लाइफ टाइम में वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आपने छोड़ा था। और कर्मा इस बीच में अगर आपने फ्री विल यूज़ करके और कर्मा बना लिया तो उनको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, तो आप अपना प्रारब्ध को और बढ़ा देंगे। तो इसलिए फ्री विल को यूज़ करने का भी एक टाइम होता है, और वो टाइम कब होता है, जब आप अपने आप को समझ जाते हैं, जब आपने गॉड सेल्फ को समझ जाते हैं। आप समझते हैं कि मैं ईश्वर का ही स्वरूप हूँ, आपके अंदर में वो सारे के सारे गुण हैं, वो क्वालिटी आ चुकी हैं जो ईश्वर की रहती है, जहाँ से आपने आपको उत्पन्न किया है। तो फिर अगर आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई फ्री विल लेंगे, तो वो आपको नुकसान नहीं देने वाली है। उस फ्री विल के अंदर में आपका भलाई होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाबा जी बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी दूसरी चीज़ क्या है कि ग्रुप कॉन्शियसनेस। तो ग्रुप कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है। वैसे तो हम सभी एक ही है जो हम यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन हर किसी का एक एनर्जेटिक लेवल पे अपना यूनिक सिग्नेचर है। हमारे अंदर जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स होती है, यूनिक है, किसी दूसरे पर्सन की वैसे नहीं मिलेगी। ऐसा हमारा एनर्जी सिग्नेचर होता है कि जहाँ पर हम यूनिक तरीके से अपने आप को ऑपरेट करते हैं। अभी इसमें अगर एक पर्सन इवॉल्व होना चालू होता है तो उसके आसपास के लोग अपने आप उसी लाइन में आने लग जाते हैं, क्योंकि हम साइंस की भाषा में देखें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग हैं हम। तो अगर हमारा चार्ज चेंज होता है तो एक इंडक्शन इफेक्ट होता है उसका। वो इंडक्शन इफेक्ट जो दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग है, अगर इसको आप ऐसे देखें कि अगर आपके पास में 2 मैग्नेट है, एक मैग्नेट आपकी कमज़ोर हो चुकी है और एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है, तो अगर कमज़ोर मैग्नेट को अगर आप लोहे के ऊपर चिपकाएंगे तो हो सकता है कि वो या तो चिपके नहीं, या चिपक गिर जाए, या फिर वो किसी तरह का अगर उसके ऊपर आपने लोड रखा है तो ले नहीं पाएगी, गिर जाएगी, उस पर चिपकेगी नहीं, क्योंकि उसका जो उसका चुंबकीय तत्व है, जो उसकी ऊर्जा है, वो क्षीण हो चुकी है, वो कम हो गई है। अब उसके पास में अगर आप कोई स्ट्रांग मैग्नेट को लेके आ जाए जो बहुत ही पावरफुल है, और उसके ऊपर में अगर आप चिपका दें, तो वो 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में उस सेकंड वाले मैग्नेट को फुल चार्ज कर देगा, और फिर उसके बाद उस मैग्नेट की पूरी पावर आ जाएगी। प्रैक्टिकली ये तो साइंस की प्रूवन चीज़ है। तो कैसे होता है कि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलाइन करता है। तो ये मैं साइंस के डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन अगर उसको हाई लेवल पे देखें, हम स्पेशलिटी की तरह देखें, तो जो हैवी मैग्नेट था, जो स्ट्रांग मैग्नेट था, वो ऐसा बीइंग है जो ऑलरेडी हायर वाइब्रेशन पे, या फिर अपनी ऊर्जा को ऑलरेडी एक एक्सट्रीम पे ले आ चुका है। उसके पास में जो भी लोअर वाइब्रेशंस के हैं जिनका गुण वही है, मैग्नेट के साथ में मैग्नेट ही करेगा। अगर आप कॉपर को चिपका देंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक गुण नहीं आएगा, मैग्नेट के अंदर मैग्नेट का ही गुण आएगा। तो जो लोअर में फ्रिक्वेंसी का जो बीइंग है, जो हमारे जैसे है, क्योंकि हम लोअर फ्रिक्वेंसी बोले या जो भी बोले, ये अभी हम परिभाषा के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए हमको। सभी हम एक इक्वल ही है। ये है कि हम अपने इवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेप पर है। पर समझने के लिए अभी ये समझिए कि अगर कोई लोअर फ्रिक्वेंसी पे है और उसके आसपास कोई हायर फ्रिक्वेंसी के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव है, सर्विस में है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। कोई गुरु है, कोई जो सर्विस में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, जिन्होंने आप बहुत ज़्यादा ध्यान किया, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, उनका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर उनके पास में कोई लोअर वाइब्रेशन का आएगा तो स्लोली उसका वाइब्रेशन भी अप होने लगेगा, और ऐसे ग्रुप कॉन्शियसनेस का मतलब इवोल्यूशन होता है। तो इसके बाद में साइंस की अगर लैंग्वेज में बोले हम, तो एक
एक प्रोजेक्ट चलता है, मैंने इसके बारे में एक आपको पहले भी बताया था कि ये जीसीपी प्रोजेक्ट बोलते हो, ग्लोबल कॉन्सेंसस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होता है कि ये यहाँ न्यू जर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ही चलता है इसको। एक्चुअली ये 1980s टाइम पे कभी इसको सेटअप किया था। तो इनमें इन्होंने क्या किया था कि रैंडम नंबर जनरेटर्स लिए, ऐसे ऐसे जनरेटर्स लिए जो कि एक रैंडमली नंबर को जनरेट करते हैं एंड उनका कुछ इंटरवल होता है। और ये सारे के सारे जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो रैंडम नंबर जनरेटर है, ये अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस पे रखे गए हैं। यूएस के अंदर में कपल ऑफ प्लेसेस है जहाँ पर रखा गया इनको, बहुत सारी जगह। फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी रखा गया है, जहाँ पर कुछ क्राइम रेट ज़्यादा है इसी कंट्रीज़ में भी रखा है, जहाँ पर कुछ स्पिरिट बहुत ज़्यादा है इसी कंट्रीज़ में भी रखा है। और ये थ्रू आउट द ग्लोब 24 घंटे 365 दिन ये ट्रांसमिशन करते रहते हैं अपने डेटा का। और ये डेटा सारा कलेक्ट होता है सैटेलाइट के थ्रू और जाता है ये बेस स्टेशन पर, जहाँ पर ये प्लॉटिंग होती है इनकी। इनसे पता लगता है कि किस तरह के नंबर जनरेट हो रहे हैं, किस तरह की ऊर्जा आ रही है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जहाँ पर देखा गया है कि हम सभी लोग कनेक्टेड है, एक कॉन्शियसनेस हमारी कनेक्टेड है। ये एग्जांपल देखा गया कि जब जब भी कोई इवेंट ऐसी होती है जहाँ पर मास लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अगर चुनाव आता है, फीफा वर्ल्ड कप आता है, महाकुंभ आता है, या फिर ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिसमें सभी लोगों को पूरे ग्लोब के अंदर में हर कंट्री, हर इंसान को उसका पता लगता है, जैसे कि सुनामी हो गया, 9/11 का हुआ था, और या फिर कोई भूकंप आता है जब बड़ा वाला। तो इन सब टाइम पे क्या होता है कि हम सभी एक ऐसी स्टेट पे होते हैं मेंटल की कि जो हम हार्ट से सोचना चालू करते हैं, हमारे हार्ट की फीलिंग्स आना चालू होती है उसमें। तो जब वो चालू होती है तो इन्होंने क्या देखा है कि जिस जगह से ये हुआ है, जिस जगह पर ये हो रहा है, वहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी पैटर्न चेंज हो चुका है। जो नंबर का पैटर्न होता था हर दिन, जिस तरह से ग्राफ बनता था, वो पूरा चेंज हो चुका है। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ तो एक 9/11 का डेटा दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको दिखे तो बताना, मेरी स्क्रीन दिख रही है? It's coming up, Master. Yeah, it Yes, shows sir. now. ओके, तो आपको सभी को पता है 9/11 का क्या हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, ट्विन टावर के ऊपर में अटैक हुआ था। तो सितंबर 11 2001 में 2001 में। तो ये इवेंट का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये जो ग्रीन ब्लू या जो यहाँ पे कलर का ग्राफ, ये रैंडम, मतलब ये रोज इस तरह से नंबर जनरेट होते हैं और उसका प्लॉटिंग होता है। और ये जो ये ग्राफ बनाया गया है, ये ईएसटी टाइम जोन में, ये यूएस न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से बनाया गया ग्राफ है, क्योंकि ये डेटा जो कलेक्ट हुआ है ये अक्रॉस द ग्लोब हुआ है, लेकिन इसको प्लॉटिंग जो किया है उन्होंने टाइम के हिसाब से, इस टाइम को दिखाया गया है न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 3 डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये था एक्चुअल प्लेन अटैक का टाइम, जहाँ पर पहला वाला प्लेन यहाँ पर अटैक हुआ था कुछ 8:45 के आसपास में, और दूसरा कुछ 9:15-20 के आसपास हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एवरीडे जब इस टाइम का जब समय होता है, एवरीडे ये जो ईएसटी टाइम है, जहाँ पर इन्होंने देखा गया है कि ये 12 बजे से लेके 8 बजे शाम तक का, इस टाइम के बीच में इस तरह से रहता है उसका सूडो कोड। अगर पूरे ग्लोब का डेटा इकट्ठा करें तो ईएसटी में उसको कन्वर्ट करें तो इस तरह का डेटा होता है, जो ऊपर नीचे चलता रहता है, रेंडमली जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर इस दिन का स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर अगर आप देखना चालू करेंगे तो ये 5-6 बजे के आसपास से ही ये डेटा ऊपर आने लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हायर सेल्फ या फिर हमारी जो एनर्जी की फील्ड होती है वो हमको बताती है कुछ होने वाला है। जहाँ पर हम बोलते हैं ना इंट्यूशन चीज़, यहाँ पर वो भी प्रूव होती है इस ग्राफ के अंदर में कि अक्रॉस द ग्लोब कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ हज़ारों में लोग ऐसे हैं जिनको कुछ न कुछ इंट्यूशन चालू हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपको खुद को भी होता है, कई बार लाइफ में आपको होता है कि आप कुछ करने जाने वाले होते हो और आपको लगता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस बारे में, और अगर आप उसका ब्रेक ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को छींक आ जाती है तो रुक जाते हैं और हम फिर बाद में कुछ करते हैं, तो इसी तरीके से आपको इंट्यूशन आता है, आपके अंदर में एक एनर्जी की एक पल्सेस चालू हो जाती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जब मास स्केल पे कुछ होने वाला होता है। तो ये जो यहाँ पर अगर देखा जाए आपको, तो ये एक्चुअल स्ट्राइक होने के पहले से ही नंबर स्पाइक होना चालू हो गए थे अक्रॉस द ग्लोब। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि कॉन्शियसली जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ कुछ सोच रहे, किसी चैनलिंग हो रही किसी मैसेज का एक साथ में,
तो वो स्पाइक आ रहा है। सडनली जब 8:45 के आसपास में पहला प्लेन टकराया था तो न्यूज़ पे फ्लैश होना चालू हो गया वो न्यूयॉर्क से कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर में ट्विन टावर के फर्स्ट टावर के अंदर में एक प्लेन टकराया है। तो वो जो न्यूज़ थी ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ वन ऑफ द बिग प्लेस एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ लाइक बिजनेस के हिसाब से अक्रॉस द ग्लोब। तो जहाँ जहाँ पर भी न्यूज़ चैनल थे सबको ये मतलब 15-20 मिनट के अंदर में अक्रॉस द ग्लोब न्यूज़ चली गई ये पूरी कि कुछ अटैक हुआ है यहाँ पर। तो लोगों ने एकदम केओस की स्टेट आ गई, सभी लोग एक साथ सोचने लगे कि क्या अचानक से। उसके बाद जब सेकंड प्लेन टकराया तो आप देखिए कि पीक पे आ गया यहाँ पर। इस टाइम पे जब सेकंड टकराया तभी सभी लोगों को एक साथ में पता लग गया था इसका, भले वो सुबह की 6 बज रही हो या रात की 2 बज रही हो, हर किसी को इसके बारे में आइडिया लग गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है यहाँ पर टेररिस्ट अटैक। और उससे जो नंबर जनरेट होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको सबको अगर इन्हें कलेक्ट किया और प्लॉट किया तो पता लगा कि लोगों के अंदर में कुछ अलग सी एनर्जी का रिएक्शन आ रहा है, जहाँ पर ये नॉट यूजुअल नहीं है। ये जो ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है ये ग्राफ यूजुअल नहीं है। यूजुअल ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर ऐसा चलता है पूरे दिन का नंबर जो जनरेट होते हैं। तो इससे जो कलेक्टिव एनर्जी है उसका पता लग रहा है कि सभी के सभी एक ही दिशा में एक जैसा सोच रहे हैं, लोग हार्ट सेंट्रिक सोच रहे हैं। और उससे जो फील्ड है जिसको हम फील्ड बोलते हैं, क्वांटम फील्ड बोलते हैं, उसके अंदर इम्पैक्ट आया है। और वो इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर ये जो ट्रांसमीटर से जो रिसीवर से वो कलेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं। फिर ये स्लोली दिन के टाइम में जब ये पूरा हो चुका था, पता लग गया है कि ये टेररिस्ट अटैक था, फिर लोगों ने हेल्प करना चालू किया, स्लोली करके नॉर्मल आना चालू हुआ, क्योंकि ये एक तरह का मतलब एक नॉर्मल खबर बन गई उसके बाद में। तो इससे क्या पता लग रहा है कि किस तरह से हम ग्रुप कॉन्शियसनेस काम करती है, किस तरह से हमारी जो कॉन्शियसनेस, जो सोचने की क्षमता है हमारी, एक साथ में जब हम सोचते हैं एज अ ग्रुप, किस तरह से काम करता है। अभी इसके अंदर में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाली, अच्छा, क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी के बारे में भी आपने सुना होगा, मैंने भी पहले बताया है कि ये क्या है। अगर मैं इसको समरी में बताऊं कि हम एनर्जेटिकली सभी लोग कनेक्टेड हैं, तो अगर कुछ एक को कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे को भी जाता है, उसका रिपल इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट उसका होता है दूसरे के ऊपर में भी। हम लोग समझे या नहीं समझे, वो सूक्ष्म तरीके से हो, स्थूल तरीके से हो या बहुत स्ट्रांग तरीके से हो, कैसे भी हो, लेकिन होता है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी के हिसाब से क्या बताते हैं कि एक फोटॉन को स्प्लिट करके अगर 7 माइल एक डायरेक्शन और 7 माइल दूसरी डायरेक्शन, 14 माइल अपार्ट, मतलब 21-22 किलोमीटर के आसपास दूर कर दिया जाए, और अगर एक साइड में फोटॉन को कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाए तो दूसरे साइड में उसको तुरंत उसका इम्पैक्ट पता लगता है विदाउट एनी डिले। तुरंत जैसा इधर टच किया वैसा उधर भी टच हो रहा है। तो अगर एक फोटॉन को स्पिन किया जाए क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज वो भी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अगर नेगेटिव चार्ज दिया तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव दिया तो उस पर पॉजिटिव। तो इससे क्या प्रूव हुआ साइंटिफिक तरीके से कि एवरीथिंग इन द फील्ड इज कनेक्टेड, हर चीज कनेक्टेड है। क्योंकि फोटॉन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, हम बोलते हैं ना सब कुछ लाइट का बना, तो लाइट फोटॉन का फॉर्म है, डेंस फॉर्म। जब फोटॉन फॉर्म होता है तो लाइट बन जाती है। तो फोटॉन को अगर स्प्लिट किया, उसका 2 टुकड़ा किया और उसको देखा जाए तो वो एक जैसा बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। तो अगर एक जगह पे कुछ इसका इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट अक्रॉस होता है। उसका ऐसा नहीं कि एक ही उसी पर्सन को इम्पैक्ट हो रहा है, उसका सब किसी को इम्पैक्ट होता है उसका। अभी एक यहाँ पर यूके की एक साइंटिस्ट है लिन मैगट, आपने सुना होगा, उसके बारे में नहीं है तो आप उसको यूट्यूब करके देखिएगा। तो उसकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, इंटेंशन एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर में काफ़ी कुछ बताया उनने कि क्या क्या किया है। तो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें किस तरह से ग्रुप कॉन्शियसनेस का इम्पैक्ट होता है चीज़ों के ऊपर में। तो उन्होंने क्या किया कि यूके के अंदर में उन्होंने एक अपना पूरा सेटअप बिठाया, जहाँ पर मेडिटेशन के लिए कुछ लोग बुलाए उन्होंने, जो मंक और जो बहुत डीप मेडिटेटर्स थे, और उनको एक प्रोजेक्ट पकड़ाया। प्रोजेक्ट ऐसा था कि यूके से कहीं शायद रशिया या कहीं पर एक लैब थी, जहाँ पर इन्होंने एक पूरा सेटअप किया था कि जहाँ पर 2 रूम्स के अंदर में सीड्स को जर्मिनेट करना था, बीजों को। तो एक रूम के अंदर में सिर्फ नॉर्मल कंडीशन, अच्छा दोनों के दोनों रूम है 100% आइडेंटिकल है। तो एक रूम के अंदर में उन्होंने सेम सीड्स को रखा, सेम क्वांटिटी रखा, सेम टाइप की उन्होंने सॉइल को रखा, मॉइस्चर मेंटेन किया, टेम्परेचर मेंटेन किया, दूसरे रूम में भी सेम किया।
और उन्होंने बोला कि रूम का नंबर दे दिया कि ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है। जो मेडिटेटर्स थे उनको बोला कि रूम नंबर 2 के ऊपर में आपको जो प्लांट्स वहाँ पे हमने लगा रहे हैं, जो सीड्स हमने लगाया उनके ऊपर प्लांट आने वाले हैं, उनके ऊपर आपको अपना ये मेडिटेशन करके उनको आपको एनर्जी स्ट्रेंथ देना है कि वो अच्छे से ग्रो हो, उनको ब्लेस करना है आपको। और दूसरी जगह पे आपको कुछ लोगों को न्यूट्रल रखना और कुछ लोगों को बोला कि उनको आपको कर्ज करना है। ये दूसरा ग्रुप है जो ऐसा करेगा। जो मेडिटेटर है उनको बोला कि आपको इनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी देना, उनको ब्लेस करना है। और फिर ये दोनों के दोनों जो रूम थे इनके ऊपर में इन्होंने फोटोनिक कैमराज लगाया जो हर सेकंड की ग्रोथ को मेजर कर पा रहे थे। तो इन्होंने 4 या 5 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा है कि जिस साइड में इन्होंने एनर्जी को भेजा था, ब्लेसिंग्स दी थी सीड्स को, उनका जर्मिनेशन रेट, उनकी क्वालिटी, उनकी हेल्थ और उनका जो टोटल वाइब्रेंस है वो जो नॉर्मल थे जिनके ऊपर में कुछ नहीं किया गया था उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा था। तो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी आप किसी चीज़ को इम्पेक्ट कर सकते हो। और कैसे कर रहे हो? क्योंकि आपने ग्रुप कॉन्शियसनेस फॉर्म की है। आपका ग्रुप की कॉन्शियसनेस है जो आपको बता रहे हैं, आपने एक इंटेंशन सेट किया और आप बोल रहे हो कि इस चीज़ को ऐसे चेंज करो। आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना एक ब्लेसिंग भेज रहे हैं, आप एनर्जी भेज रहे हैं, तो उस एनर्जी का कितना इम्पेक्ट आप देखिए यहाँ पर साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। अभी मुझे अपने अच्छा इसमें लिन मैगट ने ये तो एक किया था। दूसरा यहाँ पर मिशिगन डिट्रॉइट यूएस के अंदर में ये बहुत ही क्राइम रेट वाली जगह है, यहाँ पर हमेशा क्राइम चलता रहता कुछ ना कुछ। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा सेट किया है कि लेट्स सी कि अगर हम इंटेंशन सेट करें एज अ ग्रुप अक्रॉस द ग्लोब, मतलब एक जगह तो लाइव हो रहा है जहाँ पर कुछ हज़ार लोग हैं, बाकी इन्होंने ग्लोबली उसको ऑनलाइन कर दिया और 20,000 प्लस पीपल को एक साथ बुलाया कि आप मेडिटेट करो। और मेडिटेशन में हमको ये इंटेंशन करना है कि डेट्रॉइट का जो क्राइम रेट है वो कम हो, और ये 1 वीक तक एक्सपेरिमेंट करना है इनको। तो इन्होंने देखा कि फर्स्ट डे से लेकर 7th डे के बीच में जो क्राइम रेट था डेट्रॉइट का वो पूरे साल के अंदर का सिर्फ 10% था। अब इसमें काफ़ी हाइपोथेटिकल वक्तव्य आए लोगों के कि ये तो ऐसा हो सकता है भाई, ठंड थी या ऐसा था इस कारण लोग नहीं कर पाए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया और हर बार यही रिजल्ट आया। जब जब भी इन्होंने इंटेंशन सेट करके वहाँ पर एनर्जी को भेजा है तो लोगों के अंदर में एक हार्ट लेवल पे एक चेंज आया जिससे अपने आप क्राइम रेट को कम होने लग गया। अपने आप क्राइम रेट को छोड़ दिया, लोगों ने क्राइम करना बंद कर दिया वहाँ पर उस समय के लिए। तो देखिए यहाँ पर साइंस के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग प्रूव कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी ग्रुप कॉन्शियसनेस काम करती है। अब मैंने अपने मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ एमपी में, जहाँ पर कि हम खेतों के आसपास ही पूरा का पूरा मतलब हमारा सेटअप है। तो कई बार बारिश नहीं होती थी। आई थिंक वी आर 5 minutes above. I'll just conclude it very soon and then we'll get into English. Sorry masters if you are not able to get it, but I'll repeat it again. So गांव में क्या था कि मैं उज्जैन के पास के गांव का हूँ। तो जब भी बारिश नहीं होती थी तो हमारे यहाँ पे एक पूरा कलेक्टिवली हम एक डिसीजन लेते थे, पूरे गांव के लोग जो भी 5-7 हज़ार लोग थे, कि हम लोग उज्जैन ही करेंगे। उज्जैन ही मतलब किसको बोलते हैं? बाग रसोई। मतलब कि हम खेतों पर जाएंगे, वहाँ पर ही खाना पकाएंगे और वहीं पर काइंड ऑफ लाइक अ प्रेयर, भजन और मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन मतलब वही, इट्स नॉट लाइक क्लोजिंग आई एम डूइंग मेडिटेशन, बट एन इंटेंशन सेट करेंगे कि बारिश हो। और ये पूरी इंटेंशन ऐसे सेट करना है कि सबको पूरा 100% भरोसा रख के करना है कि बारिश हो, हम इंद्रदेव को मना रहे हैं। और मैंने जब जब अपनी लाइफ में देखा, जब मैं छोटा था, मतलब मैंने एटलीस्ट इसको 15-20 टाइम्स देख चुका हूँ मैं। एवरी सिंगल टाइम जब भी ऐसा होता था उसके नेक्स्ट डे या सेकंड डे हमेशा बारिश होती थी। तो ये भी है कि आप किस तरह से नेचर को भी आप इम्पेक्ट कर सकते हैं ग्रुप कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो दिस इज़ वेरी डीप मास्टर्स। So with this, I'll get into English and then we'll take questions both together, Hindi and English, maybe because we are already over the time. So, Master, will be a brief good intro of yours and then we'll start the English one. Sure. Welcome, Masters. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to Unified 3 session promoted by Omega Pyramid team. Currently, we are in 18th week practicing promoting another self-acceptance kriya. We are on day 3. We have Sanjay Goswami Master here today to guide us on this kriya. Welcome, Sanjay Master. Over to you. Thank you. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I welcome you all, masters, for this level 3 and chapter 2, promoting other self-acceptance. So we have learned about this last 2 days in very detail from Sudhakar master, and I'm sure like you would have got very detailed understanding. So I would go over a little bit of like what we have covered so far in brief, and then I will go over the scientific basically experiment in the same line, how science community is approaching toward this learning, what we are learning from Babaji, the education Babaji is giving us. It is being thoroughly tested, thoroughly experimented through science also now. So few things which Babaji is emphasizing here is one of them is free will. So what is free will and how we use it, and when should we use it? First thing. Second thing is group consciousness, and third thing is accepting others, self-acceptance basically. So in short term, basically, whatever is coming in front of us is our own reflection. So when we talk about free will, it's basically when we come to earth, we'll have our own soul planning session basically with our spirit guide and masters and higher self, everybody, whatever you say it, where we decide that what are we going to achieve in this lifetime, what are our primary goal, what kind of prarabdha karma we are going to take through and resolve them in this lifetime, and what will be our learning in terms of the emotions, like what kind of emotions we are going to learn. So we'll create our blueprint, basically a whole chart, our life chart. You are going to take birth in this place. This will be your parent. You decide that. This will be your friends. This place you are going to work, and you will have these friends, these enemies. When we say enemy, it's not really enemy. It's basically a person who is doing a role what you have decided. You are like a director and you are a producer of your own movie. So you choose your own characters and you choose your own play. So they come in your life to do certain part. So everything comes in front of us is basically decided by us, chosen by us and planned by us. We do it our own. But when we come into 3D, we forget about everything, what we decided. And that is required also. If you know that you cannot take a test with open book. If you have open book, you don't learn anything. You will pass the test, but you don't learn anything. So that's where we forget it. But when you do intense meditation and you do sadhana and all, then you will slowly remember it, because you are at that state where you can understand this and you will not misuse it. So that's where in meditation will get this memories and everything back. So the free will comes into picture where you decided certain thing to achieve, but you quit. So this is at very high level, I'm telling you. It goes to very small, minute level also, but in a high level, like at the broader spectrum, let's say a person wanted to achieve so much of his prarabdha karma, basically his karmic balancing, basically from the previous life, where he wanted to balance out, where he has robbed somebody, and that person in previous life has lived miserable life. So he wanted to live like, okay, what is it looks like, or it feels like, or it is energetically feels like to be a poor person. Then he would have hurt somebody, he would have broke somebody's head, skull, or he would have hurt by anyone physically. So in this lifetime, he might choose another thing also intensely, that I want to learn now how does it feel to be sick in particular way, and then certain other things were basically anger or other thing. So he comes here in this lifetime, and then he's going through his life as planned. But certain time a situation comes where he feels like, okay, it's too much for me, and now you are operating with your DMN, default mode network, basically our brain, our ego self, where you don't have the clue like why things are happening in your life. These challenges, these things is coming in your life to evolve you, to awaken you. But certain time you won't feel that and you wanted to quit. So in such cases, let's say that person run away from the situation, from the family, from the job, and he just go and settle down somewhere and he's living his life. So he is quitting there, or that person does suicide.
and finishes his life in this particular incarnation. So when he goes back, he has to go over his own journey and see like what did he do. So he used his free will. Whenever you decide what you want to do in the whole chart, you will have option yes and no. If yes, then this next level will come. If no, then the next path will come. So it's like a whole blueprint chart where you decide which place you want to go, what you want to go. Yes, then this, no, then this. And then you are provided with the free will. If you don't want to do anything of this, then you can come back and redo it, and you can quit in different ways. So that's where free will comes into picture, where you just use it and quit away. But what Babaji is teaching us here, free will in the terms of you can use it, but if you are unified with God qualities, if you know your qualities. If you know your qualities, you are unified with God qualities, then you are, even though you are going to use free will, it's not going to harm yourself and others, because it is going to come with pure intention. It is going to come from your highest energy form. So it's not going to be same impactful in negative way as when you are operating through your ego. So that's Babaji one thing wanted to tell us. Other thing is like we always feels like ego operates in different ways. So you get one ego which is like a DNM, what you call default mode network, where our brain basically had programmed in a way from this lifetime, from our childhood and previous lifetime, which memories we carry, which the energy signatures we carry, that it wanted to keep us safe. Always we wanted to be safe, and we wanted to get our own basically benefit. So that's your ego. But what happens is you start judging people using this ego. Okay, before that there is another type of ego which we call spiritual ego, where you get into certain kind of sadhana, meditation, bhakti, chanting, puja, or any kind of karma kand, and you start feeling superior to yourself, that others are not doing, means these guys are demoralized, these guys are not at that level, but you feel yourself that you are superior. So in this situation, it's more dangerous than the first situation where you are operating through ego. When you are operating through ego, then it's basically you don't have any clue about it. But when you are in a spiritual path and you still judge people, then you are going through more intense kind of karma basically. So in this situation, you start judging people. So what Babaji is telling us, don't judge people. Whoever is around you, they are perfect in their own way, and they have accepted them as is. So you don't put your own intention there, your own basically judgment on them. Accept them as is, that they have accepted themselves. And when you face this, the problem, the situation, the person will change automatically. Change means it changes within you. It's not that person is changing basically. When you accept it as is, then your expectation basically, the hurt you are going through will go away. When you accept it through your heart, then you will not have that expectation that why this is happening. You might have, let's say, your kids or your spouse or your neighbor whom you are helping throughout your lifetime, and in return you are not getting the things what you expect from your ego mind, that I should be respected, I should be treated well, or I should be getting something back in lieu of what I'm doing for them. But when you have acceptance that yeah, I'm done from my part, this is what I decided to do, and you leave it there, and you don't have that feeling that they are not doing something for you in lieu, and that acceptance is through your heart, then the heart will go away. And moment that goes away, you see that your energy and that other person energy is aligning, and that's where the group consciousness concept comes into picture here, which Babaji is explaining us again. So things start changing suddenly because you learned that lesson, you accepted that person. That person's self-acceptance also, that the person is also perfect within himself or herself, and that person has accepted it, but you are not accepting it. You have judgment. So when you accept it, then the thing will change. If you feel that from your heart that yes, I have no more that feeling, I have no more judgment on them, then things will change. It's like a Honoponopono. You know, each one of you know definitely about it. But in chart, how does it work is, this is like a Hawaiian technique.
used by Mona, and it's basically used for a long time, where in Hawaii, in their small towns, in their societies, if they go through some pandemic or some kind of trouble, then they accept the things as is and they will correct within them. So the phrase is, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. So you say that whatever is happening in front of you, it's something to teach you within. There is some part of yourself which is not accepting him. That's why you are saying sorry to yourself. I'm sorry, please forgive me. Then you are seeking forgiveness, that I have made mistake to judge in this way, so I'm feeling sorry about it. And you are, and it's not from others, it's within you. In yourself you are feeling that, and you are releasing it. Basically, when you forgive others, it's not only that you forgive others, you have to forgive yourself also whenever you go through this kind of situation. So I'm sorry, please forgive me, and thank you. Then you are expressing gratitude about it, that you have accepted it. And I love you. It's always basically, when you say I love you, means it's basically, in ego it's me, but in terms of spirituality we all are connected. So you are loving each one of each and everything within the creation. You are accepting them as is and you are loving them as is. So this is about how the things works in the way. Now the group consciousness, I was talking about this in this session. I'll quickly go over that. So now scientific community also doing many research on this. One of them is the GCP, the Global Consciousness Project. It has been run by Princeton University, and now HeartMath Institute also collaborated with them. So this project is running from early 80s actually. And I went through this earlier also, but I'll just touch upon, since this chapter is very much connected to this. So in this, the project is about, basically they have certain transmitter and receiver devices, basically random number generators, and they are placed across the globe in various countries, and within US various cities actually, where they wanted to measure how the energy signatures are coming through the field. So we know that field is basically the quantum field across us. Everything is happening within them through the energetic way. So this project is basically to measure each and every time, 24/7, multiple locations. They collect the data and they plot them in different ways in EST time, basically, because they need to parameterize it in which place they are going to collide all the data, consolidate all the data. So whenever any mass event is happening, let's say election or FIFA World Cup or Kumbh or any sort of a big event is happening, then they collect the data and they see that there is a spike in the pattern. The people are more collected, everybody's a thought, and the energy projection is towards one side. So the chart has a spike in different way. Same time, if a major tragedy is going on, then also people across the globe thinks in the same way. They collect through heart. Each one of us connect through heart. So example tsunami or the earthquakes, major earthquakes where thousands of people died and so much of chaos happened. Or 9/11, one of the example, which I would like to go over in the chart, which I was going earlier. So they see that when these events are happening, the consciousness, the field energy, the transmission of the heart energy from each one of us is projecting in certain way that can be plot and can be shown in perfect way that there is a change here. And this is not at the time when it is happening, it's a pre and post change. So pre and post, how it works is, let me bring the chart and then we'll talk about it. So pre is basically, we know that each one of us have an intuition. When we listen to our heart, when we are centric in our own space, then we'll get intuition, and if we follow it, it's always for our benefit. So a lot of time it happens where you wanted to do something and some thought comes to you, and you will take a pause, and later you find that if you would have done this particular thing at this time,
I would have gone through this loss or this kind of tragedy or this kind of accident. So same thing here. If you look at this chart, 9/11 chart, in the center you see here these these three dots. Basically, this is the time where the plane strike in a World Trade Center. The first one here, and then second one here. So if you see this blue kind of color or purple color, this is the regular graph basically every day at this time from 12 o'clock till 8 o'clock, how the graph will look like, basically how the numbers are generated across the globes. And this is plotted in EST, New York time zone basically. So across the globe data collected, but this is how it will look like during that time. But on 9/11, if you see here from early morning itself, like before, if you see here, like 4-5 o'clock started coming up. Before that, it is down, started coming up. So this part, before even it hits, it has already spiked up. What does it show is, there are a lot of people across the globe who are going through some kind of energetic shift. The intuition coming into them that something wrong is going to happen. You feel that instantly. A lot of you would have faced it in your lifetime also, and you would realize that later something happened late. So the people started basically feeling that upfront, and feeling has generated the energy signature in a way that the field is impacted. And when field is impacted, the random number generator are also impacted by that same field energy, and hence you see the numbers here, the graph here, it's started spiking up because more and more people started thinking in the same way. And there are certainly, I don't want to get into controversy, but there are certainly people who knows about it at the country level even, that something is going to happen. So those people also waiting for that this is going to happen, and that's what you see here. Now the first plane strike here at around 8:45 or so, you see here it's maximum. Within like a minute or 5 minutes, the news is across the globe that World Trade Center had been hit by plane, and it seems to be a terrorist attack. And after 10 to 15 20 minutes, another plane strike, and again you see here the spike is going up and down. So at this stage across the globe, each and every country is watching this news live, and everybody is going through chaos situation. So that's where you see it is on the peak. Now after that, the things started settling down, where people understood what is happening, and then rescue operation started, and then people realized that what went wrong across the globe. Then slowly the numbers started coming down, and chart is going down. So here people like everybody is going through prayers, people are putting their intention that hope people are okay and all this. So with this chart, if you see this scientifically proven chart, similar way there are many charts, you can look at them, like election results or tsunami or anything. You can go to GCP project, Google it, and then there are charts, by charts you can see that how these things work. So this has been proven every single time. Whenever there is a major activity happen, major accident or major tragedy happen, this global consciousness project has plotted that before and after how this happened, how the group consciousness, the global intention, people intention, how it works. So this is how it is mastered. So we all are connected. Whenever we have intention, we impact others also. And if you have a group of people who have same intention, that group can impact a major part, basically a colony, a village, a town, or a city, or a state, or a country even. Depends on how big the group is, how strong their intention is, and what kind of intention they are putting, and whether they are doing heart centric. In our Rishi Muni's era, in like Satyuga and all, whenever there are some problems going through, then the Rishi Muni used to do Havan. The Havan is basically nothing. It's basically a group conscience project where they used to set an intention to achieve some goal as a group, and that goal used to achieve always for peace or for kind of like a drought removal or any kind of like climate tragedy. They used to fix it by doing this. Even myself, I have seen this in my childhood, where I used to live in village where any time if
it is like agriculture time, we sow the seeds and then no water is coming for a week or 2 weeks, then people used to collect together, the entire village, and we used to decide that let's go and pray outside of village, we'll cook there, we'll stay there overnight or day, we do bhajan, we do kirtan, and we do praying there that water should come next, rain should come. And in my experience, 99% times, next day or next day, always it rains. So this is the impact of global consciousness, basically, how we can impact. See, if you have car and if one of the tire has less air, the car will not work properly. You may get into accident because you will not have balance. So balance will come when all the tires are in the same level. So same way, across us, if one of the person is down, that person will impact others, and vice versa also. If one of the person is high vibrational, operating through heart, that person can impact many persons, many people, and it can bring the change in society. So it's like magnet. The magnet, basically you have a magnet which is weak, and if you put that magnet beside of a strong magnet which is very, very fresh and very, very strong in the energetic field, the weak magnet will get strong in couple of minutes. And how does it work? In scientific terms, the North Pole and South Pole energy aligns because of the strong magnet has all in perfect shape. The one which is weak is all deteriorated. So they will align in perfect shape and the other magnet will become strong. But what is happening in terms of, if you look at it from a spiritual perspective, the strong magnet is basically a person whose energy is perfect, whose intention is like God intention, who has accepted his God qualities. And the person who is going through is basically a confused person or a person who is not evolved that level of energy. It's not about to judge when I say evolve or not evolve. It's about like in saying that person is not at that level. When that other person comes to contact with the person who is already a very high vibrational, then the other person's energy will start changing. We are electromagnetic being. It's been proven by science now. Each and every cell has its own memory, its own electric field and magnetic field. So when we go across any strong magnetic field, electromagnetic field transmitter, then our energy will also change accordingly. We get into induction effect. By induction effect, our energy start aligning. So that's where we are like 40 people here. We are meditating all together. This 40 will change 40,000 in terms of like changing the energy across. So you would have noticed it in your family also. You see that slowly, not now, you might be going through tough time initially, but slowly people will change. They will start listening to the things. They will start behaving in a way that you feel that, yeah, there is a change here. So with this master, we are at 10:30. We can get into meditation. So today, main thing practice wise, Sudhakar master already explained that we will go through the self-acceptance of others. So in our creating formula, we'll set the formula that we are accepting others, whoever person you have any kind of judgment or anywhere you feel that the person is not behaving well with you or anywhere. Now you understand this. Basically, when you look it through your wisdom eye, you understand that it's not the other person, it's within me actually. So you accept that person, that person has accepted their self-acceptance. So the judgment is from your side basically. You think that that person is like this, but that person has accepted himself or herself as is. When you accept it, then you are aligning yourself with that person, and then the challenges you are facing from that person will slowly go away. So it's basically you are not changing that person. You are changing your thought, your acceptance that that person is perfect, how that person is as is. So with this master, we can get into meditation. If any quick question, we can take it now or later. We can take a pause for a minute. Please feel free to raise your hand or we can get into meditation. Okay, masters, then let's get into meditation. Please take your position. Remove your spec if you have. Close your eyes and keep your eyes closed during the meditation. We'll do 40 minutes.
35 to 40 minutes. And today is another important thing is it's a full moon night. So who are observing it in US, please do extended meditation tonight. And in India also, because it's a 2 days is a kind of like an energy day before and day after. So please take advantage of this. This is very energetic time. The whole earth energy is very high when moon is closed. So please take advantage of it. Extend your meditation. Yes, Suniji, please go ahead. Yeah. Namaste ji, and I wanted to say I'm actually traveling. I don't know whether my internet connection will go off, but I definitely resonated with whatever you said. So yesterday I had an issue with the free will. So in my exploration, I have come to understand that free will cannot go away from anybody until and unless you don't use it. Okay. Yes, And yes, you're not yes. using it because the sun, like the sun, the cloud comes like that. You are clouding your free will. So every the free will actually even God doesn't interfere with, because there is a power that you have to rise above, all your other shortcomings or emotions. So the Totally. fact that it was written that, and I think that is what the power that is there is very important for you to use it to rise above everything, and you can become as creative as God, and you have that Mhm. freedom to be so. So this is my understanding. So Right. here, yesterday I was objecting about it, because what I was not agreeing is that everybody doesn't have free will, but I was saying that no, free will is available. Only thing is you need to use it. Okay, so this is the understanding that I cleared today, Mhm. and also I had another doubt whenever we were when we are telling that, okay, I'm going to choose this person to bring in self acceptance. So that itself is like, I feel that I am judging the person that he doesn't have. And then finally, in the No. process, we are also, Mhm. let me finish now. And in the Mhm. process, we are also asking forgiveness for thinking that we felt that he has no self acceptance, he or she. So I was like, I was wondering why should I do that even, Yeah, it's basically it's You like got what I'm saying, no? yeah, I got it. So let me try to explain you. So Mm, basically, it's okay. not we are judging that person. The judgment was Mm, within us actually. And what we are learning here in this particular chapter is to correct the judgment which we made about others. So you feel that that person okay. is basically not a spiritual person, or that person is basically a demoralized person. That was your Mm, thought about that person, right? yes. So here Yes. mistake was made by you basically, that you created that in that particular energy impression. Absolutely. Absolutely. You Absolutely. judge that person other side, right? But you don't Yes. know that what is going on within that person's. So in Mm-mm. other way, like Yes. what I was saying it, that person might be behaving in certain way in front of you because of Mm. your own role given to that person in your life plan. That's one thing. Okay. Yeah. Other thing, Correct. if you see it in Correct. this way, that the other thing is basically that person has accepted himself or herself as is. Now, why you are saying in this Mm. way is basically you don't judge that that person is not good. You feel that that person has accepted himself or herself as he is or she is. Then the judgment which Mm. you have in within you will go away. Then you are Mm. accepting that person as is. Ah. That person is perfect. Like we learned about ourselves that I am perfect how I am. You accept that person also, that that person is perfect as is how that person is, and that person has also accepted it. So you are accepting that that person has accepted it. Like earlier we learned about myself, that I am accepting myself. Now we are accepting other self also Mm. how they are. And you are additionally you are saying that that person also knows it, that person also accept himself or herself as is. So basically you are promoting two ways here. You learned about accepting yourself, now you are helping others also in other way, that that person also accepted. And when you see it energetically, you are creating an energy impression
within you and on other person to get into an alignment. Is that clear? So yeah, I yes, what you said is absolutely the way I'm thinking too. So when I first did it, then I immediately it came to me that I can accept everybody the way they are, just as it is. So why do I, Yes. for the sake of this exercise, why do I think that that person needs acceptance? No, so that is the dilemma for me. You understand? I Yeah. So two exactly things. understand, and Yeah. I Correct. resonate Correct. absolutely like you. Right. Right. Mm. So when you are in your God qualities, when you accept everybody as is, then the judgment question will go away. So you're right at your place that you accept everybody as is, then you don't need to do it. The exercise is needed when you go through this situation. When you have that in your mind that this person is lower from whatever things you have, like any kind of judgment, when you have it, then you do this. If you don't have it, you accept everybody as is, then you are already beyond this. You don't need to do this anymore. Yeah, and that's what when I did the exercise that time I realized that what I'm doing is not right. Actually, I know this person is doing what is his role, and I can accept him the way he is. So then I was a Right. little confused. Okay, thank you very much. I got it. Only when you have this thought about anybody, that judgment, then you do this. If you don't Okay. have it, you are already unified with everybody. You feel your essence in everyone and everyone's essence That within is a you, then you journey. don't need to No, do it. that is what I am aiming to by accepting everybody the Yes. way they are. Even if I don't find Right. I can't accept, but Correct. I have to accept the fact that I am not able to accept. So then maybe I will do it on me. Yeah. You know. Okay. Thank you. Thank you. Yes, Thank you. absolutely. Yes. Thank you. Yeah. So, okay. So we'll take question at the end. Let's do at least 30 minutes meditation now, and we'll take questions, and we'll have another 3 days more to go over the questions again, Master. So thank you very much. Let's get into meditation. So again, I was emphasizing that it's a full moon day and night. So take advantage. It's a very vibrational time now, a higher energy time. So do the meditation as much as you can. We'll do, for the session sake, we'll do 30 minutes or so. But if you feel, if you wish to continue, please continue. Thank you very much. So please close your eyes and remove your specs, hand claps. You know that how we do meditation, and try to sit straight comfortably. You don't have to erect your back and then go in discomfort position. So keep it comfortable. Take support if you need, sofa, bed, or even a wall. And I'll play soft music. So let's do a couple of deep breathing, and then we'll get into meditation. So take a deep breath, Master, as long as you can. We'll do Anta Kumbhak and Baha Kumbhak. So deep meditation and deep breathing. Take a deep breath as long as you can. Close your eyes, keep them closed. And release them slowly at your own pace. Hold and release. And before you take next breath, hold it again. Take another deep breath. Hold it before you take next breath. Release it slowly. Take another deep breath, slow and easy. Hold it as long as you can. Calm breathing now, Masters. Let's enter into our heart.
Bring your full awareness into your heart center. Each and every breath you take now, breathe it through your heart. Feel the inhale and exhale through your heart. Go deeper and deeper. Any thought, any worry, any tension, any planning, just acknowledge it for now and bring your full awareness in your heart. Breathe through your heart. Stay in your heart center. Stay in your heart. Clear our aura. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created as love, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there. Each one of you go in peace. I send love and light to each thought forms around me. Close our aura. I close my aura to all except my higher self.
Stay centered in your heart. And let's unify ourselves with God qualities. Each and every quality, feel it within your heart. Feel the vibration, feel the energy in your heart when you claim this quality. You have it, each one of you. You just need to claim it. God is love, God is light, God is truth. God is happiness, joy, and pure bliss. God is all-knowing intelligence. God is everywhere present. God is perfection. God is peace and gentleness. God is infinite energy. God is abundance. And God is not judgmental. Each one of us made in image of God. So we possess the God qualities what God has. We have them in each and every cell within us. In each and every bit of energy within us. Everything is vibrating with this energy. It's the layer of ego, the cloud of egos, which is not letting us realize it. So let's shade them away and bring ourselves in the light of God, the thousand suns together in one light. Let's enlighten ourselves. When you claim this, feel them deep within your heart and see, feel, and hear the vibration. Sense it in your heart when you claim it. I am love. Feel that love within your heart, the vibration of love, the waves of love within your heart. I'm light, I'm truth. Feel your light. I'm happiness, joy, and pure bliss. Feel this happiness, feel this joy, and feel this bliss. When your heart is full of love, then it's pure bliss. Everything around you is vibrating in that love energy. And when you feel that love energy across you, around you, everywhere, then it's a bliss, isn't it? You won't get that bliss by money, power, or fame. That bliss through this love, through this pure heart energy. I'm all-knowing intelligence. You are part of each and everything in the universe, so you know what is happening in everywhere, in each and every bits of peace. I'm omnipresent. We are part of the entire universe, and entire universe is within you, so we are present everywhere. I am everywhere present. I'm perfection. You are perfect how you are. Accept it as is. There is no change needed within you or others. Perfect how you are. I'm peace and gentleness. When you don't have anything to chase,
pure peace. There is no chaos. There is nothing which you are chasing through. You are running for. So it's a pure peace and gentleness. You are gentle. Finite energy. We are made of energy, each one of us, and this energy is infinite. There is no limit of this energy. Goes beyond, across the universe. You are that, I am that. We are infinite energy. I am infinite energy. When you are everywhere, everything is within you. You have everything, then it's infinite abundance. There is no lack. Everything is for you here. It's available for your usage. You just have to claim it. I am non-judgmental. When you accept yourself as is, you accept others as is, then there is no judgment. When you see yourself, you feel yourself in others, then there is no judgment. Judgment comes in duality. When you unify yourself, you accept that oneness, then judgment will go away automatically. The darkness is there until there is no light. A small spark of light can shade away the darkness of millennia. Same thing. When you accept everything around you, including yourself as is, then judgment will go away. And that's what we are. We accept ourselves and each other as is. Now you can do claim and acceptance for others if you feel to do it for anyone whom you have any sort of judgment or you have not accepted the person, you can do it now. I claim, and then you can put the person's name, that person's self-acceptance, and feel in within your heart when you say that I'm claiming that person self-acceptance, and feel that love for that person in your heart, that judgment going away from that person. Feel it. This is not just to prompt it, to chant it, to speak, or to just repeat. When you accept it, feel that acceptance in your heart. And now, next part of formalized thought will basically release this. Any hindrance caused by any thought within you. I heal and release all the thoughts I may have that interfere with this claim. You are claiming the self-acceptance of other persons, so whatever is any thought within you which cause this, I heal and release all the thoughts. Those thoughts you are releasing now, which cause this problem, cause this non-self-acceptance of others. Known or unknown, conscious or subconscious, my thoughts are one with the same and in tune with God's thought. Now is a practice always, whenever you do meditation, any prayer, any chanting, always
Forgive others, forgive yourself, and send love to anyone who are in need. So bring that person in your awareness, in your mind's eye, and forgive that person. And release any thought you have about that person, any judgment. Release that also and send love. I forgive you and I love you. Do it at your own pace. Anybody who is still bothering you in your energetic form, release this thought. Bring that person in your awareness, forgive and send love. You can create your own. Pray for forgiveness and sending love. I'm sorry, please forgive me, each and everyone, whomever I have hurt in this lifetime or any of my previous lifetime, knowingly or unknowingly, consciously or subconsciously, directly or indirectly, physically, mentally or verbally. Please forgive me and release me from this karmic bond. Thank you, thank you, thank you, I love you. I forgive each and everyone whoever ever hurt me in this lifetime or any of my previous lifetime, knowingly or unknowingly, directly or indirectly, physically, mentally or verbally, consciously or subconsciously. I forgive you and release you from this karmic bond. Thank you for being part of my life to teach me a lesson, to help me out in my soul evolution. Thank you, thank you, thank you, I love you. Always wind down your day or your meditation with gratitude. Express gratitude about each and everything to each and every person around you who are helping you directly or indirectly in your soul journey, in your 3D life, and in your spiritual life. Be grateful to them for helping you. So, thank you, universe, for giving me this lifetime to continue my soul journey here on Mother Earth.
Thanks to our parent for being part of our soul journey and accepting us as their son or daughter. Thanks to our parent for giving us birth, giving us their unconditional love, nourishment, protection, education, and each and everything what we need to continue our journey on here on the earth. Thanks to our sibling, our relatives, spouse, children, colleagues, and each and every person around us who are helping us directly or indirectly in our soul journey. Thanks to Mahatar Babaji, Brahmarshi Pitama Patriji, our higher self, our spirit guide, all the ascended masters, light beings, for helping us, guiding us, and protecting us on this spiritual path and showing us the light. Thanks to each and every master here in this group meditation to help each other to evolve as a group, to bring that group consciousness, to heal ourselves and Mother Nature. Slowly, slowly bring your awareness back into your body, masters. Feel the energy around you. Feel the warmth around you. Feel the presence of masters around you. Take a deep breath and let this cosmic energy, the blessing from masters, flow through in each and every cell within your body. Let it energize, vitalize each and every cell of your body. Take another deep breath and hold it. Feel that the cosmic energy flowing in each and every cell in your body. And it's taking your body to next level, next vibration. Wiggle your toes, wiggle your finger, feel your body. Bring your both hands together, place them on your eyes. 4, 3, 2, 1, 0. Please open your eyes with a smile on your face. Take your own time to come out of meditation, or if you feel to continue, please. If you are coming out of meditation, drink some water. It's good to always drink water after meditation. You gain a lot of cosmic energy. So you hydrate your body so that you can absorb the energy in your cells. Thank you, Master. So please continue if you wish to continue meditation. And we'll see you tomorrow again. If any questions, we can talk or we can just wind it up now. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, Sanjay Master. That was a wonderful, wonderful guided meditation. Thank you very much. Together with full moon energies, it was so wonderful. Yes, it is. Yes, yes. Masters, anyone have any questions or share your experiences or anything? Namaste, Master. Thank you. Yeah. Yeah, I got one thought. So, on this auspicious Sure. Purnami day, all of us, most of us are doing the meditation for 24 hours.
So it is the group sadhana. So let us all do the meditation for the welfare of the uniform. How it happens? Let's pray everybody gets unified with their higher consciousness first. So all together, this group consciousness will be unified with the universal consciousness. So we are not going to change any Wonderful, karma. wonderful. This Very- sankalpa will become God's sankalpa, Daiva Very big sankalpa. intention. We need not worry about karma theory, soul theory. Everybody should be unified with their higher consciousness, and so that the whole consciousness will be unified with the universal consciousness. Forget about the soul, forget about the higher consciousness. Yes. Connect, everybody connect with their higher consciousness. Our group consciousness will be unified with the universal consciousness. Then universe will do Absolutely. what it's supposed to do. So no, we need not worry about karma, burning, or soul. That's what I feel. Thank you, sir. Right, right. And that's ultimate goal actually. That's goal of when you want to achieve the ascension, that's the goal. And that's where Patriji started this the group meditation, especially the Purnima meditation, to do together with Sankalpa. So thank you for emphasizing it again, and let's do that all together. Continue your meditation also, masters. Thank you. Thank you very much, Sanjay Master, for guiding us today. Thank you all for your time. Thank you. Thank you all, Masters. Thank you all, Masters, for joining Tomorrow. this session. See you all See in you all tomorrow. Until then, you have a good day, good night. Thank you, Masters. Yeah, thank you, Masters. Actually, I just shared the 24 hours continuous meditation link in Unified Group. If anyone want to join, please join. That's good. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, sir. Yeah.